वीक टुडे तो आज बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। It was a serious case, that's why. And I was thinking, na, first time he interrupted or the second time which opposition. Okay. Okay. So So today's discussion, if you are new, while the session is going on, you can text me 90623 now. Okay. तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लोग लास्ट दिन तक कितना तक हुआ था? Linear algebra. ठीक है. Last I think we discussed about the basis and dimension, those kind of stuff, na? As a class divided into two parts. Part 1, we will be doing theoretical analysis, and part 2 will be doing some questions as well. Okay. What is this operator thing? This identity operator and a lot of things which we discuss in mathematics. What is this operator? Ideology is actually stands for. The answer is yeah, operator is like a DDX is an operator, right? Law can be considered as an operator. So this kind of operators actually decide the course of the idea which we are proceeding. In any linear algebra structure also, this is the thing. So, for example, if you take a space, okay, and if I ask you to put an operator inside, and then another operator, you just add them, and the line is beside this. It's impossible for me to take any two operators where if I try to connect it by a line, and that is our line is outside. So this is the structure of a convex set also. So if you see this thing, if I take any 2 points, but is it applicable for all points? Answer is no. In this space, there are some points, if you connect these 2 points, it's cool with that. But some points are not so cool with that. Okay. So if I join it via this, then only we can form it. Okay. Is it applicable for these non-linear lines or non-linear lines as a link? No, this has to be a straight line. Okay. So this is the first. So any operator happens in this way. In a bookish language or in a structured way, काफी कुछ चीजें आएंगी. But if I want to do it with respect to a linear operator, so linear algebra structures. So anyway, it's a linear operator which we are doing. Okay.
Now, if this operator, for example, the operator is a t is the name of the operator, and t to the power k is equal to 0. Okay? Or this is called the zero operator. Then t to the power m equal to 0 and t to the power m minus 1 not equal to 0. These two are called, you know what? There's a name. मैट्रिक्स की तरह यहाँ भी एक ऑपरेटर का नाम है nilpotent operator. So this is the nilpotent operator, and the whole thing is the nilpotency index. ये बाद में बहुत काम आएगा. पहला वाला थ्योरी थोड़ा बोरिंग लग रहा है. I understand. Okay, but these are one or two things which will be helping us in growing. जैसे नेबरहुड ऑपरेटर भी है. अब मैथ्स में नेबरहुड क्या होता है? मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में जो रहता है, पास में जो रहता है, ठीक है, आपके सामने वाली खिड़की में जो रहता है या रहती है, so that person is your neighbor, right? क्लियर? अब मैं नेबरहुड को कैसे समझाता हूँ? देखो, जहां पर मेरा एक फ्लैट है, मैं अपने घर में रहता हूँ. ये घर मेरे दादाजी का बनाया हुआ है, लेकिन मैंने एक छोटा सा फ्लैट भी खरीदा. तो इस फ्लैट में इस तरीके का सिस्टम, बहुत ऊंचा लंबा एकदम ऐसे ऐसे एक एक फ्लोर में 1 2 3 4 6 लोगों का घर, नहीं 4 लोगों का, ठीक है. तो फ्लोर के अंदर ऐसे लिफ्ट से घुसेंगे तो इस साइड में एक का दरवाजा है, एक साइड में एक का, यहाँ मेरा दरवाजा है, यहाँ पर एक, ठीक है. तो टेक्निकली ये मेरे नेबर हुए और ये लोग तो मेरे फ्लोर नेबर्स भी हुए. ओके, लेकिन दरवाजा बंद करने के बाद आई कैंट सी माय नेबर फ्लैट में. आई कैंट सी हिम, इम्पॉसिबल, क्योंकि दोनों पास पास वाले विंडो है ना, आई कैंट सी. लेकिन मेरे पास वाला जो बिल्डिंग है, एग्जैक्टली एडजेसेंट बिल्डिंग, उनके यहां से आई कैन सी दैट पर्सन फेस टू फेस. Okay, this is the neighborhood concept of the nilpotency and the normal thing. So who is the neighbor here for me? Both are my neighbors, but technically, in order to reach to this neighbor, I need to cover this. नीचे आना पड़ेगा लिफ्ट से, फिर से लिफ्ट से जाओ, फिर से इसके ऊपर में फ्लैट में जाओ. So there is a L distance I have to cover in this case. Still there are neighbors. So any nilpotency index or in a linear algebra structure, there are two types of neighborhood structure is there. One neighborhood structure where you don't have to cover much of a distance, very much closer, but you have to get out of the system. And the second thing is you can be within the system, but the distance is much different when you try to analyze the structure. So yeah, the usage of operator. जैसा ऑपरेटर आप देंगे उसी तरीके से ये सिस्टम अपने आप को बदलता रहेगा. इफ आई यूज एन ऑपरेटर विच इज वेरी इजी, मुझे सिर्फ इससे बात ही करना है, तो मैं तो यहाँ से विंडो से ही बात कर लूंगा. सो आई डोंट, दैट ऑपरेटर इज यूजफुल. बट इफ आई नीड टू मीट हिम फेस टू फेस, यहाँ पर मुझे दरवाजा खोल के जाने से नहीं होगा, मुझे पूरा का पूरा बिल्डिंग का क्रॉस करना पड़ेगा. ओके, नाउ इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर मी टू फाइंड अ नेबर whom is easily accessible in both way, then how? तब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे विंडो से यहाँ तक का एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, है ना. तब मैं क्या होऊंगा, अपने विंडो से निकलूंगा, ये ब्रिज के ऊपर से डायरेक्ट उनके रूम में चला. Is it possible? Answer is very much possible. That bridging is the advanced operator which I am going to do it. That is the linear dependence or independence comes into play. ठीक है. तो अगर मेरे अंदर में इस देयर इज अ लीनियर डिपेंडेंसी बिटवीन मी एंड हिम, अगर मैं यहाँ जा सकता हूँ तो वो तो मींस मेरे घर में आ सकता है. सो दैट इज अ लीनियर डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर. सो बोथ आर माय नेबर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम. बोथ आर द स्ट्रक्चर्ड फॉर हिम, बोथ आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर. मेरे घर में आग लगेगा तो इसके घर में भी आग लगेगा, सामने वाले में भी लगेगा. ओके, but the thing is that in order to reach to this, there are two separate operators are used. But if there is a bridge, then suddenly any one of the operator becomes too close. अब तुम now you guys can say, अच्छा सर यहाँ तो आपने ब्रिज लगा लिया, आपने ये पास वाले के साथ कैसे बात करेंगे? तो मान लो we share a same wall, right? तो मैं वॉल बीच से तोड़ दूंगा, मैं इनसे बात करूंगा. So again, what kind of operator I use, that is dependent on the requirement. यही है आज का क्लास का मेन थीम. ओके, जस्ट अ सेकंड.
Maths sometimes at higher level becomes hard because many of the cases when I was interviewing people for the post of the faculty for the PG level for teaching, it was almost I got an application of whopping 963 applications from all over India on LinkedIn. आप लोगों को सुन के थोड़ा बहुत आश्चर्य होगा. Among them, only 13 people said they can teach at master degree level. So why? They all have master degree. That's why they can apply here. But the thing is that many of them are focusing on only on the undergraduate level. Because the higher level mathematics को हम लोग दो तरीके से करते हैं. हम लोग maths को theory बना चुके. Many of the cases. Okay. In the college also gives you, if you see the maths paper of an honors level, many of the cases is just like a theory. And the second thing is in the competitive level, no theory comes. The theoretical application comes on. It's not that thing 10 mark का आपको कोई proof दे दे. So those who are really performing with the 71, 72% in the undergraduate level, they are failing in this level. तो आप लोगों का एक सवाल था कि अगर क्वेश्चन का कुछ segregation किया जाए with respect to the kind of paper, I always say you need to solve the parallel papers of the other examination which is associated with your examination. So today I will give a small segregation in the middle of it also. जैसे मान लीजिए अगर ISI का एंट्रेंस हुआ, ISI M.Math, ISI has a separate kind of examination. मैं M.Math का ले रहा हूँ. Still M.Stat का भी stat के साथ एक math segment आता है, but that's too easy, not compared to this part. And ISI MSQE, ये तीनों का मैथ्स का लेवल फिर भी ठीक है. बाकी अगर मैं छोटा सा बेसिक लेवल में और आ जाऊं, MSQMS is relatively easier. इसके साथ एक और है M.Tech CS. अब मैं M.Tech CRS और QR को भी इसी के साथ ही डालूंगा because they have the very similar kind of a thing. तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. MSQMS and this is done. Okay. और MSLIS is a very easy, that's useless examination. Okay. So that comes with the class 9-10 level CAT level maths. Okay. तो ये हो गया ISI. इसके साथ पैरेलल लेवल में आएगा TIFR GS मैथ. पूरे इंटरनेट छान के तुम लोगों को शायद ही एक दो मिलेगा जो ये पेपर को सॉल्व कर. हम लोग करते हैं और एक दो टीचर लोग कोशिश करते हैं. ठीक है. दिस इज अ वेरी टफ पेपर, नॉट एवरीवन डूज इट एंड वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो डू. इसके साथ साथ हम लोग का इसके लेवल के साथ आ जाता है CMI एंट्रेंस. CMI का दो पार्ट है, एक है TS डेटा साइंस और दूसरा है मास्टर्स एंट्रेंस. ठीक है. ये दोनों. इसके साथ अगर हम लोग IIT में आएंगे, IIT का भी दो पार्ट है. एक है गेट के लेवल का क्वेश्चंस पूछाते हैं, तो उसमें IIT लेवल गेट मैथ्स एंड यहाँ पर जैम. Obviously, mathematical statistics also has a math section, but that is relatively easier than that. So, इसको मैं same category में रखूंगा. Okay. Obviously, jam math comes with the category of this thing. Gate maths again comes with the category of this thing. So, jam math or gate math. This year, jam math question paper was relatively harder than the normal. लेकिन jam math और gate math में किसी एक को आगे रखना हुआ, तो इस बार की हिसाब से obviously jam math is harder, but in general gate math पहले है. Everything comes to the right. So ये है आपको ये सारा पेपर को सॉल्व करना. ओके. आपको नहीं, मतलब मैं कर दूंगा, आपको उसके ऊपर कोशिश करना है, देखना है, लाइक दिस as many as possible. यार ये आमतौर पे सर लोग इसलिए नहीं बोलते. अच्छा, इसके साथ एक और है UGC नेट, सॉरी आप लोग का तो CSIR है. CSIR नेट मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. ऑब्वियसली ये मास्टर्स देने के बाद है, ये हम लोग क्यों करेंगे. ऑब्वियसली you don't have to do the entire paper, only the section, some of the questions from this. इसका 25 से लेके फर्स्ट सेक्शन 1 ही आप लोग कर सकते. सेक्शन B एक्चुअली. ओके. सेक्शन B 25 to 54 या 5 तक रहता है. ये सेक्शन के मैथ्स ही आपके लेवल. It has a very good linear algebra kind of a question. Okay. तो इसको भी आपको कर. So this is the kind of a full Monty इसे कहते हैं पढ़ाई. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना पेपर का पास 5 ईयर कर लिया. जैसे मान लो आर्यन का एक पास्ट ईयर सोल्यूशन आता है, जैम मैथ का आता है. ओके. बट एक्सेप्ट दैट नन ऑफ देम हैज अ पास्ट ईयर सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड. आर्यन वाला से क्वेश्चन मैंने देखा है, आमतौर पे सर लोग थोड़ा बहुत झूठ बोलते हैं, ये मत करो उसका गलत है. एक दो क्वेश्चन गलत रहता है, बट दे हैव अ गुड आइडिया ऑफ दैट.
But except that, and we have tried to solve all these questions, and even we haven't managed to solve each and every paper, every question. वो स्टूडेंट आके हम लोग को धक्का मुझे धक्का देता है तो मैं सॉल्व कर दे, just like that. Okay, me and Avigyan also solves it. He's also from ISI, and Sukomal sir solves it. ये तीनों मेरे रैडर में जो है वो इनको कर सकते हैं. तो आप लोगों का काम है सिर्फ मुझे क्वेश्चन मत भेजिए, just tell me about doubts in that way, so that we also become feel like that कि हाँ चलो अब करते हैं, क्योंकि मैं जब बैठता हूँ मैं एक साथ में सारा डाउट ही करके भेजता हूँ जिन जिन लोगों को भेजा. Okay, so keep me posted on this. Let's come back to maths. अच्छा, ये जो स्पेस है इज अ स्पेस एंड आई एम सेइंग इट्स अ null स्पेस, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं. तो इसके ऊपर सोच कैसे हम लोग लाएंगे. सो let me just come to one or two important things, then I will go to that thing. तो आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स रखता हूँ, ठीक है. पुराने कुछ चीजों को हम लोग पहले देख लेते. लेट्स डू समथिंग वेरी इजी, फिर इसके बाद टफ चीज में फिर से जाएंगे. So in this kind of cases, it's a normal matrix, ठीक है. इसमें आपको चार चीजें निकालना है. पहले देखते हैं आप लोगों को आता है कि रेंज, ये मैंने सिखाया नहीं है लेकिन अभी कर दूंगा. कर्नल, रैंक एंड लास्ट वाला तो ऑब्वियसली नलिटी होगा. कर पाएंगे. अच्छा, दोज हु थिंक दैट ऑनलाइन जैसे चैट जीपीटी, गूगल बर्ड, तो आप लोगों को बोलने के बाद मैंने भी पूरा पेपर को डायरेक्ट देकर टाइप करके खुद चेक किया है. सो अनफॉर्चुनेटली दे कांट सॉल्व दिस. चैट जीपीटी इज गुड फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक मैथ्स, लेकिन ये सब चीजों को ये बेचारा नहीं कर पा रहा, अभी तक तो नहीं कर पा रहा. Okay, especially of this hard level maths. You can also cross check by typing the question over there, और तीन बार टाइप करेंगे तो तीन बार अलग अलग आंसर देगा. Okay, so थोड़ा सा tricky. Rank is very easy. Rank finding isn't the question here. The other things are very important. तो पहले हम लोग इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है ना. बस तो ऐसा कुछ चेंजेस होगा. सो कॉलम प्रॉपरेशन करते हैं, C3 माइनस C1 कर देते हैं, ठीक है. ठीक है. देन C3 माइनस C2 करेंगे. अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम लोग को लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर कितना मिल रहा है, दो. तो दीज आर द टू, ये जो इतना बार तक अभी तक बोल रहा हूं, सो दीज आर द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स. इसको लिखेंगे कैसे, 0 1 सॉरी 1 1 -1 0 2 1. वन थिंग फॉर श्योर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये मैथ्स में क्या होता है ना, जब हम लोगों को न्यूमेरिकल मिलता है हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, और जब ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देता है थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. इसीलिए मैं कोशिश करता हूं दोनों टाइप के क्वेश्चंस को ही क्लास में कराने. ओके. तो ये है लीनियरली इंडिपेंडेंस LICV. LICV means column vectors. So basis for, what is the basis for range space? यही है. और इसका रैंक वैसे क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो केसेस, तो दो है, ठीक है. अब नल स्पेस, टू फाइंड द नल स्पेस. अच्छा, ये नल स्पेस बोल रहा था, इसी को ही कर्नल बोलते हैं, ठीक है. तो ये कर्नल ऑफ ए कैसे आएगा, लेट एक बी ले लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 0 1 1 2 3 और क्या था, -1 1 0, ठीक है. इस बार लॉजिक थोड़ा तगड़ा लगाना है. दिस इंटू दिस V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस V3 ऐसे हो जाएगा. सो V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस V3, सो V1 प्लस V3, सो इक्वल टू 0.
दूसरे से क्या होगा v1 plus 2v2 plus 3v3 equal to 0 minus v1 plus v2 equal to 0. तो v1 equal to v2 आ गया and v1 equal to minus v3 भी आ गया, है ना? So clearly v1 equal to 1, v2 equal to 1 and v3 equal to, solving we get minus 1. So basis क्या है? So basis for the null space A, nullity directly becomes 1. So 1 का नाम है तो absolute रैंक नलिटी थ्योरम याद है ना सबको? है ना? ये the dimension of range plus nullity of the transformation. दूर सब ना direct. What is rank nullity theorem? डायरेक्टली भेजो मुझे. Rank nullity theorem text. So it is the number of columns that is equal to 0. लेकिन देखिए अब rank plus nullity equal to what? Number of columns of the matrix. Equal to y. Y equal to column. दो सही आंसर है. रैंक नलिटी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें. Please raise your hand if you need further explanation on this right now. सिर्फ एक, बाकी सबको आता है. Sir, rank 3 बोलो तो 0. Only. एक सवाल की तरफ देखते हैं. Let's take this 3, 1, minus 6 and 2. ठीक है? इसका रैंक क्या है? कुछ नहीं करना है. डिटर्मिनेंट क्या है इसका? 0 ना. तो रैंक ऑब्वियसली होगा 1. Oh sorry, 12 ना. Sir, minus 6 ना वाले तो थोड़ा पहले 1 तो प्लस ले लेते ना. ठीक है. So determinant equal to 0. So rank equal to 1. Clear? Now here rank nullity plays this. और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं. दो माइनस मुझे चाहिए. अब तो ठीक है ना. तो रैंक इक्वल टू 1. ठीक है. अब इसका बेसिस क्या है? 3 minus 6 and 1 minus 2. These are the considered as basis. दोनों में से एक. ठीक है. अब देखो 3 minus 6 can be reduced up to 1 minus 2. Done. So the kernel जो है, जो null base हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं of the matrix A is vectors for which A into V equal to the null vector. Clear? Which is a vector space or space rather say spanned by, span क्या होगा? Scalar multiplication. Scalar multiplication. Exactly. So now you put that thing into this. So what is the span over here? We do the scalar multiplication, this will come as 1 minus 3. So now the whole thing is that rank plus nullity is dependent on this number of columns. So rank nullity theorem. This is also associated with the dimensional structure. देखते हैं आप लोगों से क्या क्या आंसर दिया है. एक क्वेश्चन में भेजता हूं. Let's have a look into this question. Stand by 1 minus 3 equal to rank plus nullity equal to dimension. The easiest way to say it. Rank
plus nullity equal to dimension. The vector space में theta के लिए map का जो transformative का सेटा डायमेंशन देना है, ठीक है. नेक्स्ट इज सर ये, हाँ आ रहा हूँ, नल स्पेस में भी आ रहा हूँ. तुम जो बोल रहे हो उसे कहते थे सिल्वेस्टर्स लॉ ऑफ नलिटी. आप लोगों के एक दोस्त ने सवाल एक पूछा है तो मैं लिख देता हूं. सिल्वेस्टर्स, ये आपके सिलेबस वाला नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है. लॉ ऑफ नलिटी, इससे काफी आसानी से हो जाएगा. ये क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नलिटी ऑफ ए कॉमा नलिटी ऑफ बी, एन फॉर नलिटी. ओके, मतलब क्या डालने पर ये नल हो जाएगा. दैट्स द थिंग. अगर आपके पास 5 है, कितना लेने पर आप नल होंगे? 5. x से कितना लेने पर आप होंगे नल? x, just like this. So this thing is less than equal to nullity of AB. This thing is less than equal to nullity of A and nullity of. Exactly, but in rank there is a different kind of thing. अब रैंक में हुआ तो, और रैंक पूछा है तो बताना पड़ेगा. सो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. मतलब एडी को प्रोडक्ट करके जो रैंक आएगा वो, बुझते পারছো? लेस देन इक्वल टू क्या হবে? मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी. Next. But remember that these are all applicable for finite dimensional vectors. So infinite dimensional basis to infinite dimensional. Then the formula is not applicable. Infinite dimension नहीं, pre-decided नहीं हुआ तो. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में भी सिंगुलर नॉन सिंगुलर होता है. ट्रांसफॉर्मेशन जितना ऊपर उठेंगे उतना ये फालतू होता जाता है. ठीक है, जैसे मान लो एक मूवी था ट्रांसफॉर्मर्स, सुना है? तो ट्रांसफॉर्मर्स का पहला मूवी हॉल में जाके देखा था, तो छोटा था. ओके, सो ट्रांसफॉर्मर्स 2 का नाम था ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन. ये फिर भी देखने लायक था. थर्ड मूवी था इन लोगों का डार्क ऑफ द मून. दैट वाज स्टिल ओके, क्योंकि 2 मूवी अच्छा था, थर्ड मूवी थोड़ा गड़बड़ कर सकता है ऐसा सोच के लोगों ने देखा. फोर्थ मूवी से ये देखने लायक नहीं रहा. एंड इवन इफ यू सी द लेटेस्ट ऑस्कर्स, अभी हॉलीवुड में एक झगड़ा चल रहा है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, कि एजेंसी नाउ हैव टू प्रॉमिस. जैसे एजेंसी मतलब जो बड़े बड़े लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जैसे वार्नर ब्रदर्स, मेट्रो गोल्डविन मेयर, जैसे कोलंबिया पिक्चर्स, सोनी पिक्चर्स, मार्वल स्टूडियोज, इन लोगों को एक प्रॉमिस करना पड़ेगा. इफ देयर इज एआई कम्स इन, सो एआई शुडंट बी टेकिंग देयर जॉब्स and it should be a law in the entire US for the upcoming 100 years.
इसी के लिए सब लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अभी बहुत सारे लोग इसके साथ हैं. There is another one, there's a lot of strike going on. So this Oscars में Jimmy Kimmel, so who hosted the Oscars, so he said that maybe the sixth part of the Transformers movie is being scripted by AI. That's why it's so bad. ठीक है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मर्स का इतना बात क्यों कर रहे हैं? Because no, there's a saying. It's so bad that it's maybe done by the AI. But obviously the movie has a lot of pointings of towards that. Whatever, we don't want to discuss that thing. So this transformation भी वैसा ही है. What is this non-singular one? What is this non-singular transformation? Quite like that. Let T be a linear transformation of the vector space UL. Let T be a LT of UL. ठीक है? In the vector space, भैया VF के अंदर ये हो रहा है. So T is said to be a non-singular transformation. If the null space, मतलब T of kernel of T, मतलब जो null space है, consists of zero vector only. मतलब if alpha belongs to U, T of alpha equal to zero. समझ में कुछ नहीं आ रहा है? Don't worry, अभी एक sum करने से आ जाए. So singular हुआ तो obviously just an opposite thing of it. So let T be a linear transformation of this vector space, and there exists, if this value is not zero, and that belongs to this, and still T alpha equal to zero. तो मतलब zero लेके अगर zero आया तो नॉन सिंगुलर, और नॉन जीरो लेकर भी zero आ गया तो वो सिंगुलर है. Okay. So if you take a good actor and the movie is a flop, that's a non-singular one. And if you take a bad actor and still the movie is a flop, then it's a singular one. एक करते हैं. Let's see on this. Okay. एक T लेते हैं. Is it a singular one or it's a non-singular one? तो हमें क्या चाहिए? चाहे दोनों ही केस में मुझे ये तो 0 0 0 ही चाहिए भाई. Okay. So x cos minus y sin theta equal to 0 equal to x sin theta plus y cos, and that is equal to z. यही तो है ना? फर्स्ट दोनों को सॉल्व करने से एक ही रास्ता है, x equal to y equal to 0 from first two, and third one तो मेरा 0 दिया ही हुआ है. So solving these three cases, what we get? Directly solution में भी 0 आ रहा है. Okay, so in this three-dimensional real plane, we get that x, y, z, 3 are 0. Hence, it's a T is non-singular. Just like this thing. So it's a non-singular case. These three values separately 0 is coming, and also my target point is 0. So 0 is providing me 0, so that is a non-singular. And singular is a non-zero value that I'm taking, yet I'm working with the 0 part, and if this value, obviously, if this x, y, z, all of them are together not equal to 0, then it's a singular case. If the case is, normal mathematical formation is just like that. For example, x is non-zero, then it's a singular one. The matrix basics change and all these things are also plays a very important crucial role into these cases. Not every time things will be this much easy. Let's start with the ISI M.Math
question now of 2006. Okay. ओके, मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते एन टी क्या है, नल स्पेस, आर टी क्या है, रेंज स्पेस। तो क्वेश्चन तो बहुत टफ है। कौन सा सही है या फिर मल्टीपल सही है? तो लग पड़ते हैं काम में। लेट x1, x2, x3 belongs to this n, ठीक, तो दिया ही हुआ है। सो ऑब्वियसली टी ऑफ ये तीनों जीरो है, सो ऑब्वियसली तीनों का अलग अलग से जीरो करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस पुट इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो, दिस जीरो तो जीरो। सो पुटिंग जीरो टू ईच सेक्शन स्पेस क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू x3, मतलब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3, ठीक है। तो डायमेंशन तो क्या होगा, 1, ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन हियर। सो ऑप्शन ए यहां से अपना इनकरेक्ट हो गया क्योंकि डायमेंशन यहाँ 2 दिया। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ आर टी क्या होगा, रेंज स्पेस के हिसाब से है। सो इट्स 3 पॉसिबल वैल्यूएट्स आर यूज्ड, x1, x2, x3, 3 minus 1 by this nullity, that is 2. So dimension of the range is 2. यहाँ क्या दिया है, dimension of the range is 2. So second option is correct, है ना। थर्ड में चलते हैं, आप थर्ड के लिए चेक करेंगे। 1 1 1 belongs to NT, but 1 1 1 does not belong to the range space, है ना। ध्यान से देखिए, रेंज स्पेस इक्वल टू नल स्पेस बोल दिया, मतलब जो वैल्यूज रेंज में मिलेगा वही नल में मिलेगा। तो नल में तो मुझे 1 1 1 मिल गया, रेंज में 1 1 1 है, दैट इज 0 0 0, इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन वी गॉट। सो रेंज एंड नल इज नॉट सेम, सो सी इज रॉन्ग। लास्ट इज डी, एमटी इज अ सबसेट, नहीं, सो डी, सी नहीं हुआ तो डी भी नहीं। Sir, range space 0 0 0. Range space 0 0 0. Oh, this is a value which you have got from this. 3 values you have got, na? So that is, don't take it as we are doing it a numerical solution of x1 plus x2. So linear dependencies only occur with respect to a singularity structure is being maintained or not. Singular में क्या बोला था, नॉन जीरो लेकर जीरो टारगेट है, नॉन जीरो आया, और जीरो लेकर जीरो आया, दैट्स अ नॉन सिंगुलर। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आप बेसिक क्वेश्चन देते हैं। Sir, एमन क्वेश्चन तो बड़े दिखा है, आरटी इक्वल टू एनटी मतलब रेंज स्पेस का नॉट स्पेस इक्वल है। हाँ, तो 2 into 2 कैसे बेसिक बात है, 3 into 3 कैसे पता है। अब देखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा दिया है कि t ऑफ 1 2 भैया है 2,3, ठीक है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, 0 1 हो जा रहा है, 1 4। हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट मीन कोई मल्टीप्लाई प्लस ऐसा हो रहा है, सो डायरेक्ट थिंग्स हैपनिंग। सवाल ये है, इसी पैटर्न से 5 6 क्या होगा।
क्लास 9-10 का सम्स दे दिया है. Just write it in this way. 5-6 hint is this. 5-6 is alpha into 1-2 plus beta into 0-1. और जब वैल्यूज आएंगे उसको इसके साथ इक्वेट करना है. तो 5 इक्वल टू अल्फा यहां से डायरेक्ट आ गया एंड बीटा इक्वल टू -4 डायरेक्ट आ गया. सो 5,6 ऐसे देखते हैं सही है क्या नहीं. 5 इंटू अब क्या लेंगे कि 1,2 और 0,1. ठीक है. ठीक है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ. So T of transformation of 5,6 अभी तो रिप्रेजेंटेशन हुआ. So that is 5t, 1, 2 minus 4t, 0,1 as t is linear. So 5, 2,3 minus 4, 1, 4 equal to 6 of -1. So that is the answer. वहां तक करने के बाद लास्ट 3 स्टेप थोड़ा अलग से आता है. No, linear transformation you don't find the basis here. They have only given a transformational part. यही बात है. बेसिक गुलो আমাদের মোট से আছে m1 m2 তে পেয়ে যাবে. एक और तरीके से भी कोशिश करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे करेंगे, एक और रास्ता. দরকার নেই, বাচ্চাদের মনে পড়ে. ठीक है. सो लेट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑन द स्टैंडर्ड बेसिस. यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस है. তখন রেকর্ডেড লেকচার তো খুব সহজেই দিতে পারবে. তোমার রেকর্ডেড লেকচার রিলেটেড ভিডিও গুলো যায়নি তোমার কাছে? যায়নি তো. তুমি A1 A2 A3 B সিরিজ কিভাবে দেখতে হবে জানো? Some reply if you're there. I'm sending it to you all. প্রশ্ন করো না, এটা কোনো প্রশ্ন হলো না পাঠালো. Just a second, guys. Send it to you. Lecture series study plan.
What happens? नथिंग। दो लेक्चर सीरीज स्टडी प्लान आप लोगों के पास गया, आप लोगों से B5, B6, B7 जिसमें लिखा है वो पेज को देखना है। दोनों ही सेम पेजेस का है, मैंने दोनों ही भेज दिया। ओके, ये टॉपिक वाइज एक बेसिक प्लानिंग किया हुआ है। ओके, एंड हाउ टू एक्सेस दैट ये भी तो आप लोगों के पास रहना चाहिए। ठीक है, चलते आगे। It has a standard basis E1, E2, E3. Of R cube is then T is what? What can you say about the T? About all the possibilities of the T, subspace, span, कुछ भी हो। तो क्या बोल रहा है? As matrix, if the basis of this thing follows with this matrix, then one can say about the matrix itself. What can you say about the matrix? यही सवाल। हाउ टू वॉच द लेक्चर वाला भी भेज देते, मिल गया है लकीली। एक YouTube वीडियो में मैंने बनाया था कि हमारे लेक्चर्स को आप कैसे देखेंगे। In this video, I'm going to tell you that how to watch the test from. हाँ, यही है। Yes, this is visible from mobile, desktop, any of the structure. कौन से भी? हाँ, कौन से भी देखिए। तो चलिए, let's talk about the matrix T with respect to the basis E1, E2, E3. यही तो दिया हुआ है ना? And the matrix itself is 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. So, अब आगे बढ़ेंगे. Now, T of E1 is E3. T of E2 is E2. And this transformation here is where vector place is E. क्यों हुआ? क्यों हुआ? This to 0, this is only this, so that's why E3. This is 0, this is E2, and this may E1. Clear? तो फर्स्ट इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं, सो वी कैन से दैट, कुछ सवाल ये है, इट्स सब्जेक्टिव टाइप, व्हाट वी कैन से अबाउट द टी। तो सो द मैप्स ऑन द सबस्पेसेस, हाँ, सबस्पेसेस E1 एंड E2, अच्छा कौन अपने आप में मैप हो रहा है? सिर्फ E2। तो मैप्स ऑन द सबस्पेसेस on itself is happening for E2 only, not for E1, not for E2. ठीक है, ये पहला हो। Next, what is the characteristic equation in this case? So if we just find the characteristic equation, so that will give you the what values? नहीं पता, eigenvalues. Solving characteristic equation we get A minus lambda I EV. इसका eigenvalues क्या क्या है भाई?
इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे. Okay, you solve it 1, 1 and -1. Okay. So here all the eigenvalues are not distinct. That means what? We cannot say it has distinct eigenvalues. Okay. Or this has a double eigenvalue case also. Repetitive eigenvalue case also. Can a matrix have all the eigenvalues same? That is also possible. Okay. So these are small things we can say. अच्छा, इसके स्पैन के बारे में पूछ लिया तो कैसे बताएंगे? What do you say about the span? No, not in that way. So eigenvalue एक एक करके करना पड़ेगा. So eigenvector corresponding to lambda equal to 1. This is given by what? This you need to calculate 2 eigenvalues. यहाँ पर मैं वही एक करके ऐसे इस फॉर्मेशन की तरह x1, x2, x3 and this is equal to and this is a matrix itself. इस तरीके से और एक होगा 0, 1 ये तीनों पोजीशन को सिर्फ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को चेंज करके कर सकते. So even with this kind of basic matrices, we can form this span also. Dimension के एक और सवाल आया है. This is from CMI 2013. That is, if u equal to ABC, a plus 2b minus 3c equal to 0, 2a plus 5b minus 2c equal to 0. Then find the value of the dimension and rank. Give it a try. So that's our last question of this evening. So coefficient matrix क्या है इसका?
Yes. Okay. Oh, अच्छा given matrix भी अलग से दिया है. I skipped it. Which is the same as this given. Oh, let A then this thing. जो भी है. So determinant of A क्या है? 1. निकाल के रखना चाहिए. Minus plus 61. Not equal to 0. So rank of A कितना है भाई? 3. तो nullity क्या हुआ? n minus rank of A. n कितना है? 3 minus 3 0. काम खत्म. Dimension 0. हाँ. ठीक है. Next class में we will do all advanced level problems. ঠিক আছে, যেদিন সকালে ডাকবো মনে করিয়ে দেবো, এটা পুরোটা করলে করতে হবে। हाँ, एनी क्वेश्चंस? आप लोगों को ये मिल गया होगा कैसे पढ़ना है एंड নেক্সট উইক থেকে অনির্বাণ হবে এটা, ঠিক আছে? তুমি আমাকে এখানে রিমাইন্ড করে দেবে, আমি পাঠানো শুরু করে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।